Good morning, class 7. Welcome back to your chemistry classroom once again. Today I am going to start from corrosion of iron. The process is also known as rusting. Look at your book. The term rusting involves slow oxidation of iron in presence of air and moisture. So two factors are responsible for the rusting. Their air and moisture. In the presence of air, I mean oxygen and moisture, iron being oxidized, resulting in formation of rust, hydrated iron 3 oxide. So what is the molecular formula of rust? That is hydrated iron 3 oxide. Rusting of iron. Iron plus oxygen, it can produce iron 3 oxide. Rust, hydrated iron 3 oxide. The molecular formula of rust, Fe2O3, XH2O. X means the number of water molecule present inside the water, I mean rust. Rust के अंदर जितना molecule water present है, that is just denotes by X. 4Fe plus CO2. It can produce 2Fe2O3. XH2O. It produced rust. So student, you will learn the molecular formula of rust. It is not X. Iron, when exposed to the atmosphere, slowly react with oxygen of the air in the presence of moisture, forming a brown coating called rust. On its surface, rusting corrodes iron and reduces its structural strength. मतलब रास्टिंग के द्वारा नॉर्मली आयरन पार्टिकल्स जो है वो क्रोड्स होता है, मतलब उसका सरफेस एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस दौरान उसका स्ट्रक्चरल जो स्ट्रेंथ ये कम होने लगता है। एक्टिविटी टू स्टडी द कंडीशन ऑफ रास्टिंग. Polished iron nails of equal size are placed in a test tube A, B and C. The nails in each test tube are subjected to different conditions. The result in each test tubes are noted to find out which nails will rust as per the condition. So look at the test tube at first. Test tube A contains serves as a drying agent and absorb moisture. Anhydrous calcium chloride. टेस्ट ट्यूब के अंदर आयरन नेल्स घुसा के कैल्शियम क्लोराइड मिला दिया गया है, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड जो है ये अंदर ही मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा. कंडीशन प्रेजेंट ऑक्सीजन इन द टेस्ट ट्यूब. कंडीशन एब्सेंट मॉइस्चर इन द टेस्ट ट्यूब, बट इन द टेस्ट ट्यूब देयर इज नो मॉइस्चर. रिजल्ट आयरन नेल्स डू नॉट रास्ट. तो लुक एट द कंडीशन एट फर्स्ट, क्योंकि रास्टिंग के लिए दो कंडीशन जरूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर. सो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ये टेस्ट ट्यूब के अंदर घुसाने के कारण टेस्ट ट्यूब के अंदर जितना भी मॉइस्चर है इट इज एब्जॉर्ब बाय कैल्शियम क्लोराइड. दैट्स व्हाई देयर इज ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इनसाइड द टेस्ट ट्यूब बट देयर इज नो मॉइस्चर. एज अ रिजल्ट आयरन नेल्स do not rust. Conclusion: moisture is essential for rusting. Next, test tube B contains boiled tap water with oil layer on top. टेस्ट ट्यूब के अंदर बॉयल वाटर मिला दिया गया है और आयरन नेल्स घुसा दिया, उसके ऊपर हम लोग ऑयल लेयर डाल दिए. कंडीशन प्रेजेंट मॉइस्चर इन द टेस्ट ट्यूब बट कंडीशन एब्सेंट ऑक्सीजन इन द टेस्ट ट्यूब इज as because the water is boiled, so the oxygen level is completely low. Same way, there is oil layer on the above the surface, so oxygen is absent in the boiled water, but moisture is present there. That's why iron nails do not rust, because oxygen is also essential for the rusting. Next, test tube 3 contains ordinary tap water. Ordinary tap water के अंदर हम लोग iron nails को डुबो दिए. Condition present moisture as well as oxygen in the test tube are present there. Conditional absent, there is no extra condition is needed. So result iron nails rust. Conclusion: moisture and oxygen essential for the rusting. So as because there is tap water, so in case of tap water, oxygen is dissolved inside there. Same way moisture is present. So both conditions are available for the rusting. That's why iron nail get rusted.
Next, methods of preventing rusting. These are the common method by which we can prevent the rusting. Methods of preventing rusting involves prevention of both air and moisture from coming in contact with iron objects. Oiling in case of non-metal. कोटिंग लगाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ऑयलिंग. थीन लेयर ऑफ ऑयल और ग्रीस, जिसको हम ग्रीस कहते हैं. एक्सपोज्ड एंड मूविंग आयरन पार्ट्स, व्हीकल्स, टूल्स, मशीनरी, कोटिंग ऑयल और ग्रीस प्रिवेंट्स रस्टिंग. तो नॉर्मली आयरन टूल्स, मशीनरी, व्हीकल्स, इसके ऊपर हम लोग ग्रीस यूज करते हैं एज बिकॉज रिडक्शन विल बी मतलब फ्रिक्शन विल बी रिड्यूस एज वेल एज रस्टिंग विल बी प्रिवेंट. नेक्स्ट, पेंटिंग, रेड लेड ऑक्साइड पेंट. पेंटिंग के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? दैट इज रेड लेड ऑक्साइड पेंट. हेवी आयरन पार्ट्स इंस्टॉल्ड इन machinery, buildings, vehicles. Aluminum paint is applied on the telegraph poles and act as an anti-corrosive paint. So here as red lead oxide paint used as a coating basically on machinery, buildings and vehicles. In case of that, aluminum paint is also applied on the telegraph poles. So telegraph poles के ऊपर हम लोग क्या यूज करते हैं? Aluminum paint and act as an anti-corrosive paint. So here as aluminum paint also act as a anti-corrosive paint and it is also applied on telegraph poles. तो इसके नीचे दाग लगाना. तो telegraph poles के ऊपर नॉर्मली हम लोग कौन सा चीज यूज करते हैं? That is aluminum paint. Next, coal tar or pitch, unseen iron parts, लोअर पार्ट्स ऑफ शिप्स और ब्रिज. तो नॉर्मली जो चीज हम लोग नहीं मतलब काली आंख से नहीं देख पाते, लाइक लोअर पार्ट्स ऑफ शिप्स, शिप्स के नीचे वाला पार्ट नॉर्मली जो पानी के अंदर डूबा रहता है, और ब्रिजेस. टार इज चीपर एंड लॉन्गर लास्टिंग देन पेंट्स. तो पेंट के हिसाब से टार इज चीपर एज वेल एज लॉन्ग लास्टिंग. नेक्स्ट, enameling, baking of a mixture of silicates on iron at high temperature. Domestic iron articles like pots, pans, stoves, refrigerator, enamel coating is hard, impervious to air and moisture, has no effect on food. So normally in case of domestic utensils like pots, pans, stoves, refrigerator के ऊपर से हम लोग enameling यूज करते हैं. इस दौरान it helps to remove the corrosion because it is hard, impervious to air. Air को remove करता है as well as it removes the moisture and has no effect on food also. Next, metallic galvanization. इसको दाग लगाना बहुत important process. Galvanization, iron sheets dipped in molten zinc. So here as galvanization process के लिए क्या यूज किया जाता है? Molten zinc coating, that is also known as galvanization process. Iron articles which are generally exposed to the heavy moisture. Iron articles जो चीज normally heavy moisture के अंदर डूबा रहेगा, like roof shade, buckets, tubs, etc. Zinc is more active than iron and forms zinc ions more readily than iron, hence protects the iron. So जो heavy iron articles exposed to heavy moisture, then galvanization process is applied to reduce the rusting process. Next, tining. Iron is dipped in the molten tin. Iron articles generally for edible application. Tined box for vegetables, meat, etc. Tining is a preferred to galvanization for articles used for the edible applications. Galvanized steel is not used for food containers. तो इसके नीचे दाग लगाना. Basically, galvanized steel is not used for the food containers. So as because food containers के लिए नॉर्मली जो चीज में हम लोग खाना रखेंगे वो चीज अगर आयरन का होता है तो उसको ऊपर हम लोग क्या करेंगे? टाइनिंग करेंगे, मतलब टीन के अंदर, मॉल्टन टीन के अंदर उसको डुबो देंगे. Galvanized steel is not used for food containers since food articles dissolve zinc forming poisonous compounds. So if the food particles are kept placed in the galvanized particles, whereas it produce poisonous compounds. Next, chromoplating. Iron articles electroplated with chromium
nickel, tin, copper. So here is a mixture is used as a chromoplating. The chemicals are chromium, nickel, tin, copper, etc. Iron articles generally for decorative purposes, jewelry, cutlery, motor parts are basically dipped into this mixture. Chromoplating on metal object can be decorative, corrosion resistant and improves the surface hardness. तो नॉर्मली इम्प्रूव करता है किसको, सरफेस हार्डनेस बढ़ाने में, जिस दौरान कोरूशन कम होता है. मेथड इज हाउएवर कॉस्टली एंड यूज्ड एक्सक्लूसिवली. तो ये मेथड जो है, ठीक है, क्रोमोप्लेटिंग इज द हाईली एक्सपेंसिव मेथड. नेक्स्ट, ये पेज नंबर 83, ठीक है. Corrosion of iron activities. There is no need to learn all these activities. So just leave the page, and the last page is uses of certain metals. This page is very important as because your question will be MCQ type. So please learn the page very carefully. First, iron uses automobiles. Steel is heat treated and welded. Steel is malleable with a high tensile strength. All of you know. Next, pig iron, ड्रेन पाइप्स. नॉर्मली ड्रेन में सिटी और अर्बन एरियाज में जो अंडरग्राउंड ड्रेन सिस्टम होता है, वहाँ पे नॉर्मली जो हम लोग आयरन का पाइप्स यूज करते हैं, उस पर यूज किया जाता है पिग आयरन. पिग आयरन इज द मोल्ड इनटू कास्टिंग्स. पिग आयरन इजीली फॉर्म्स अ चीप ऑफ कॉस्ट. सॉरी, ये कॉस्ट होगा, कास्ट हो गया, कॉस्ट. Pig iron is an intermediate product obtained from the blast furnace during production of iron. Next, gold. Jewelry. Gold is used in wire on sheet form. Gold is expensive, lustrous, malleable and ductile. So just use, याद रखना है, gold is used in the finely powdered or foiled forms. Next, medicine purposes. Gold particles used in the cancer treatment. इसके नीचे दाग लगाना. In case of medical purposes, gold is used in especially cancer treatment. Bind to the drugs injected while travel to the site of the tumor only. So when it is gold basically used in medical purposes, सिर्फ याद रखना है कौन सा चीज में यूज किया जाता है, in case of cancer treatment. Next, copper. Electrical cables. Copper is used in the thin wires. Copper is a good conductor of electricity. That's why it is used in thin wires. मतलब जो इलेक्ट्रिक वायर प्रिपेयर किया जाता है उसके अंदर हम लोग कॉपर यूज करते हैं. Calorimeters. Copper is used in the mold form. Copper is a good conductor of heat. That's why copper is used in calorimeters. Aluminium utensils. Aluminium metal is molded into utensils. Aluminium is a good conductor of heat. Aluminium powder is mixed with linseed oil. And aluminium is anti-corrosive in nature. Normally ये मतलब जो यूज जो दिया गया है, इस पे समझाने का कोई चीज़ नहीं है. यू विल जस्ट लर्न, पूरा का पूरा ही याद करना है कौन कौन एस्पेक्ट में मेटल हम लोग यूज कर रहे हैं. इनके साथ पैकेजिंग. This thin aluminum foil is used in packaging. Aluminum is light and has bright appearance. Next, zinc. Galvanizing process के लिए यूज किया जाता है जिंक. जिंक metal is coated on iron sheet. Zinc prevents rusting. Lead. Bullets. Lead is molded into casting. Lead has a high specific gravity. Next, flexible pipes. This point is very important. Flexible pipes. Normally जो water pipes होता है, lead is casted into a thin sheet. Lead is malleable and resistant to corrosion. Next, magnesium. Fireworks. Magnesium is used in the powder form and magnesium burns with a dazzling light. इसीलिए magnesium fireworks में use किया जाता है. Photography. Magnesium is used in the strip form. Magnesium produces a bright flash. That's why it is used in photography. So normally you will learn the points as well as particular name of the metal. So this page is very important. You will learn very carefully. Hope all of you understood what I've discussed in this video. So in this next class, जो क्लास बेसिकली हम लोग सैटरडे को पोस्ट करेंगे, उस क्लास में हम एक्सरसाइज डिस्कस कर देंगे, क्योंकि एज बिकॉज टाइम इज वेरी लेस,
तो टाइम ना मिलने के कारण हमको सैटरडे को वीडियो पोस्ट करना होगा। उस वीडियो में हम एक्सरसाइज पोस्ट कर देंगे। So for today, up to this portion.